Hello guys, good evening everyone. Welcome to our Clavimate classes. Clavimate, it is your true study mate. So हम Clavimate classes application specially design कर रहे हैं CCC पिलाମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ जोटी provide କରାଉଛି high definition animated classes ତା ସହିତ live class YouTube based doubt clearing daily practice test and weekly test and ଏଇ ସବୁ ତମକୁ ମିଳିପାରିବ on Clavimate classes application ରେ ତମମାନେ ଏଇ କ୍ଲାसेस ର ଲିଙ୍କ କୁ ନିଜ फ्रेंड्स ମାନଙ୍କୁ शेयर करो एंड ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭାଇଟ କର एंड जो माने ई प्रीवियस क्लास ର ଭିडियो सब देखिनो ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖି ପାରିବ YouTube ରେ अवेलेबल रहिଛି तो गाइस चलो आज ର क्लास ଆମେ स्टार्ट କରିବା तो ଆମେ कंटिन्यू କରୁଥିଲେ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो आज ର कंटेंट अछि राइबोसोम ଆମେ ଆଜି राइबोसोम ଉପରେ पढिबा राइबोसोम होची सेल ର ଗୋଟେ ऑर्गेनेल सो फर्स्ट देखिबा राइबोसोम कोन Ribosomes are non-membranous basophilic granules rich in ribonucleic acid and distributed in the cytoplasm of both prokaryotes and eukaryotes. So ribosome गोटे एमतिका सेल ऑर्गेनेल जोटा कि प्रोकैरियोट्स रे प्रेजेंट अछि एंड यूकैरियोट्स रे मध्ये प्रेजेंट अछि एंड एटा होचे गोटे ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर बेसोफिलिक मींस बेसिक ग्रैन्युल जोटी कि आरएनए और ताको हम कहथौ राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है They were first isolated and named by Pallad in 1955. So ribosomes are also called Pallad's particle. जेहेतु ताको Pallad डिस्कवर करते ताको Pallad's particle भी कुहा जाए. Ribosomes are made up of rRNA and proteins and are center of protein synthesis. So ribosomes टा को हमें कौन कहउचंती सेटा rRNA रो तयारी हेची एंड सेटी प्रोटीन्स मध्य प्रोटीन्स रो हेल्प रे ही आरएनए प्रोटीन और राइबोसोम रो हेल्प रे तयारी हेची हमरो एंड ताको सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कुआ जाय मींस हम बॉडी रे जेति के भी प्रोटीन तयारी होची सेटा राइबोसोम रो हेल्प रे हेताय राइबोसोम ही ताको तयारी करिबरे सहाय्य करथाय These are the smallest cell granule with a diameter of about 150 to 300 angstrom. एटा एते छोटो गोटे अछि सेल रो ऑर्गेनेल जहार के डायमीटर बहुत छोटो दे occur either freely in cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum or nuclear membrane of eukaryotic cells एटा कोठी प्रेजेंट थाए साइटोप्लाज्म रे प्रेजेंट रहउची और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित अटैच हेकी थाए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रे अटैच हेकी थाए तो यार तीनटा लोकेशन हैला सेल साइटोप्लाज्म नहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन Next, a large number of ribosome occurs in a single cell. गोटे single cell ले बहुत सारा ribosome present है. Each E. coli cell contain about 15,000 or more ribosomes. गोटे E. coli cell रे 15,000 ରୁ ଅଧିକ ribosome present होची. एटा होची राइबोसोम रो स्ट्रक्चर देखो एटा स्मॉलर सब यूनिट एटा होची लार्जर सब यूनिट दिटा को कंबाइन करले हमर हिया होची एटा राइबोसोम कंप्लीट राइबोसोम सिमिलरली स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट गिव राइज टू राइबोसोम एटा देखो स्मॉलर सब यूनिट रे कोन स्ट्रक्चर रहिची गोटे हेड अछि क्लेफ्ट अछि गोटे देन प्लेटफॉर्म बेस लार्जर सिम्पली सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस स्टॉक रिज स्मॉलर और लार्जर मिसी राइबोसोम हैला सिमिलरली गोटे प्रोकैरियोटिक और गोटे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर एठी देछि नेक्स्ट तार सब यूनिट्स विथ डिटेल में जानिबा सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम each ribosome has two sub units सेटा देखिली बे डायग्राम में तार दुटा सब यूनिट रहउची स्मॉलर सब यूनिट which fits like a cap over a larger sub unit okay larger sub unit ऊपर smaller sub unit cap like से fit हेकी थाए the two units associate in presence of Mg++ ion at and slightly above a critical concentration of 0.001 mole so dita unit kete bale associate होती jete bale magnesium ion presence रहुची okay तार केते concentration 0.011 mole the two subunits dissociate below this critical concentration of magnesium ion जदि magnesium ion concentration एतिकी मोल रु कमी जाउची ताहाले से दिटा सबयूनिट पुनी डिसोसिएट हे मींस सेमाने सेपरेट हे जानती as the ribosomes are isolated from cells by differential centrifugation depending upon their sedimentation coefficient ribosomes are of two types गोटे होची 70s ribosome आ गोटे होची 80s ribosome okay
So ribosome होची दुईटा टाइप 70 ଆଉ 80S ର on the basis of their sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient means ribosome को हम यदि sedimentation तार formation करिबा ताहाले से एतिकी रेट रे 70S रेट रे sediment formation करे ଆଉ 80S रे तो एटा डिपेंड करूची प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक राइबोसोम उपरे ओके तो ताकू नेकी एई वैल्यूटा बाहर करा हैची 70S ribosomes are found in prokaryotic cells as well as eukaryotic organelles like mitochondria and chloroplast 70S तो हमरो prokaryotic cell रे रहउची and eukaryotic cells represent है but 80S ribosomes are found in the eukaryotic cells 80S टा only eukaryotic cells रे देखा जाय एटा डिफरेंस टा मन रखिबो the 70S ribosome is constituted by 30S smaller subunit and 50S larger subunit जोटा ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 70S subunit ଅଛି ସେଇଠୁ smaller subunit ର sedimentation coefficient ହଉଛି 30S and larger ର ହଉଛି 50S 80S ribosome similarly is constituted by 40S smaller subunit and 60S larger subunit during protein synthesis many ribosomes arrange in a chain on a common messenger RNA strand and are called as polysomes or polyribosomes ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ଯୋଉ mRNA ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି mRNA ଉପରେ ରାଇବୋସୋମ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅ ଚେନ୍ ଯେମିତିରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ରାଇବୋସୋମ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ସବୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପଲିରାଇବୋସୋମ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोट राइबोसोम देखो एटा 70S रे गोटे 50S रहउची गोटे 30S रहउची देन 80S रे गोटे 60 आ गोटे 40 23S rRNA 16S rRNA 32 proteins 21 proteins 5S rRNA it is in the 20S rRNA 18S rRNA 50 proteins 33 proteins 5S rRNA 5.8S rRNA एटा हमरो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम रो स्ट्रक्चर नेक्स्ट देखिबा केमिकल कंपोजिशन Ribosomes are chemically composed of ribosomal RNA माने rRNA and various types of proteins ଏବେ ଉପରେ जो फिगर ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ରହୁଛି rRNA ଆଉ proteins ରହୁଛି molecular weight arranging from 6000 to 75000 A prokaryotic 70S ribosome has the rRNA about 65% and a protein about 35%. Okay, prokaryotic ribosome रे rRNA रे amount सबुठु माने अधिक थाए protein ठारू while the eukaryotic ribosome have more protein and less RNA. बुझी पारला प्रो आउ यूबी रे डिफरेंस कोन eukaryotic रे protein अधिक थाए the 30S subunit is composed of 16S rRNA means 1500 nucleotides and 21 different proteins that is S1 to S21 whereas 50S subunit contain 23S rRNA 3000 nucleotides 5S rRNA 120 nucleotides and more than 30 proteins L1 to L34 in eukaryotes 60S subunit contain 20S rRNA 5000 nucleotides and 5.8S rRNA 160 nucleotides and 5S rRNA and 50 proteins The 40S subunit of eukaryotic ribosome has 18S rRNA and 33 proteins. बस एटा होची तार कोन गोटे राइबोसोम प्रोकैरियोटिक हो बा यूकैरियोटिक हो तार केमिकल कंपोजिशन एबे देखिबा तार अल्ट्रा स्ट्रक्चर The smaller subunit consists of a head, a base and a platform. देखिथिली गोटे हेड पार्ट रहउची गोटे तार बेस रहउची and गोटे platform. The platform separates head from base by a cleft. The larger subunit has a ridge and a central protuberance and a stalk. The ridge is separated from central protuberance by a valley. When the two subunits assemble and are associated, a tunnel occurs between the two subunits for smooth passage of mRNA.
ओके जेतेबेले दुईटा सब यूनिट सेमानकर एसोसिएशन होउची ए टाइप रो एसोसिएशन हे गला तो गोटे स्मॉल टनेल टाइप रो थाए जे कि हेल्प करे एमआरएनए पास करिया पई ए सॉरी ए टाइप रो डायग्राम रहउची एटा हला ए टाइप रो रहउची तो एठी जो स्मॉल टाइप गोटे टनेल टाइप रो स्ट्रक्चर थाए जोटी की आरएनए टा पास करे तो अब हम एठी कोन डिस्कस करले हेड रहउची बेस रहउची प्लेटफॉर्म आ डायग्राम तुमको दिखाई देबी प्लेटफॉर्म रो हेड टा केमते सेपरेट होउची बाय क्लेफ्ट आ लार्जर सबयूनिट को कोआ होउची एज ए रीच ए सेंट्रल प्रोटीन बैलेंस एंड स्टॉप देखियो स्ट्रक्चर आउटरो देखि दोची यस एटी होची स्ट्रक्चर देखो एटा होची बेस एटा होची हेड हेड आ बेस भीतर एटी क्लेफ्ट अछि हैला सेमती लार्जर सबयूनिट रे देखो गोटे सेंट्रल प्रोटीन बैलेंस अछि स्टॉप अछि रीच अछि एटा हे गला तमरो राइबोसोम रो स्ट्रक्चर स्मॉलर आ लार्जर सबयूनिट रो Next ଆମେ ଦେଖିବା function of ribosome. Ribosome provide the sites for protein synthesis means translation ରେ help କରୁଛି. This is done by accepting the correct new amino acid coming to it bound to transfer RNA at A site by forming peptide bonds between amino acids by peptidyl transferase activity. This is done by the ribosome activity of larger subunit site. Translocation of growing peptides still attached to tRNA to P site, a peptidyl site, exit to empty tRNA from E site. हमर मेन फंक्शन होची राइबोसोम रो कि से कोन करिवो प्रोटीन तयारी करिबारे हेल्प करिवो जेटा कि हमर ट्रांसलेशन प्रोसेस गोटे ताबे माने पढिबो सेकंड ईयर रे एमआरएनए रो प्रोटीन होची से प्रोसेस को हम कहि थाउ ट्रांसलेशन तो सेटा केमती हबो राइबोसोम से प्रोसेस रे हेल्प करे राइबोसोम जोटा रहूची तारो तीनटा साइट थाए गोटे थाउची पी साइट ए साइट आ गोटे ई साइट ए पी ई सो फर्स्ट ए साइट रे कोन हे गोटे एमिनो एसिड आसिकी अटैच हबो देन सेटा पी साइट को आसी जाए सो फिर आ गोटे एमिनो एसिड आसीबो तो एमती से माने कोन करती पी साइट रे आसिकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुए दुईटा एमिनो एसिड भितरे ओके ए टाइप रो चेन रो लेंथ टा इंक्रीज हे जाए एमिनो एसिड चेन रो लेंथ इंक्रीज हे जिवो तेबळे एमती एमिनो एसिड गुडा फॉर्मेशन हे जाउची तो ताको बिते पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हे गला परे एग्जिट साइट रो कोन हे जाए एमिनो एसिड बाहर को रिलीज हे जाए हैला तो ए प्रोसेस रे गोटे हेल्प करूची राइबोजाइम एक्टिविटी लार्जर सबयूनिट जीए से गोटे एंजाइम भाबरे काम दिए ए प्रोसेस टाइम पे ताको कहै जाउची राइबोजाइम जोटा कि लार्जर सबयूनिट रो सेटा फंक्शन ओके exit to the empty tRNA from E site तो ए प्रोसेस रे राइबोसोम पाखकू एमिनो एसिड टा किए नै कि आसीबो tRNA ट्रांसफर आन ताको कहै ट्रांसफर आरएनए tRNA और ट्रांसफर आरएनए ओके सो ट्रांसफर आरएनए रो काम कि से राइबोसोम पाखकू एमिनो एसिड्स नै कि आसीबो एंड एमिनो एसिड मान को भितरे गोटे चेन फॉर्मेशन हुए ताको आमे कहि थाउ एमिनो एसिड को चेन को प्रोटीन कहि थाउ प्रोटीन एक्चुअली एमिनो एसिड्स रे ही तयारी होइथे सो ये tRNA जे ट्रांसफर आरएनए जे एमिनो एसिड नै कि आसी राइबोसोम पाखकू सी ई साइट दे कि माने एग्जिट साइट दे कि पुनी राइबोसोम रो बाहर जाय थाए सो ईच एमिनो एसिड पई गोटे गोटे सिंगल ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट अछि ओके सो एटा होची राइबोसोम रो मेन फंक्शन से गोटे एंजाइम परिका काम करे राइबोसोम गोटे सबस्ट्रेट परिका काम दिए जे कि प्रोटीन सिंथेसिस करिया रे हेल्प करूची सेल रे ओके सो राइबोसोम विषय त माने पढिलो तो राइबोसोम रो कोन फंक्शन जानि परलो मेन तरह होची प्रोटीन तयारी करिबारे हेल्प करिबा और तार आ गोटे फंक्शन होची से सेल रे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संगे भी अटैच के प्रेजेंट थे तार लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट होची जोटी की आरआरएनए टीआरएनए प्रोटीन्स प्रेजेंट रहउची
ओके सो राइबोसोम टा आज कंप्लीट करले आमे तो राइबोसोम को तमे भलसे पढ़ो तो रिवीजन करो एंड किछि भी डाउट्स थिबो ताहले तमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़ि पारो या फिर कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि परिबो तो आज पई एतिकी थैंक यू गाइस